हमारे पास अभी हम बीसीक्यूज करेंगे, ठीक है। बीसीक्यूज में हमारे पास है मैराथन रनर विच टाइप ऑफ एमनोरिया हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म मैराथन रनर मींस लो बॉडी फैट स्ट्रेस and hypothalamic separation, low GnRH, low FSH, LH, hypogonadotrophic hypogonadism, eugonadotrophic body में normal FSH like in PCOS, so A is correct, hypogonadotrophic hypogonadism. Third 4 degree perineal tear, no answered mark. Second and 4 degree perineal muscle tone, anal center intake. 4 degree extend through the anal epithelium, rectal mucosa and all. 4 degree definition. Advantages of mediolateral with midline ability, less extension. Mediolateral goes away from midline. Less chance of staying into third 4 degree. Midline heal better and more customers, but extend more. Misoprostol use, pregnancy is still alive, effect misoprostol use, pregnancy is still alive, fetal effect, Mobius syndrome, misoprostol use, pregnancy is still alive, fetal effect, Mobius syndrome, misoprostol is a prostaglandin E1 analog known as teratogen Mobius sequence. Mobius sequence limb defect IOGR. Mobius is a classic one test. TK Mobius syndrome is a Mobius syndrome, misoprostol is prostaglandin. Mobius syndrome, misoprostol is a prostaglandin E1. TK Mobius syndrome, misoprostol prostaglandin E1. का नोन एज टेरोजेन मोबियस सिक्वेंस लिम्ब डिफेक्ट करेंगे NIOGR करेंगे ठीक है साइड इफेक्ट ऑफ मिसोप्रेस्टोल डायरिया प्रोस्टाग्लैंडिन इवन स्टिमुलेट GI मोटिलिटी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन GI motility GI prostaglandin even stimulate GI motility uterine contraction also cause fever uterine fever uterine rupture abortion fever uterine rupture abortion diarrhea करेंगे मिसोप्रेस्टोल टीका prostaglandin even stimulate GI motility and uterine contraction also cause fever uterine rupture abortion side effect of carbamazepine facial dysmorphism and neural tube defect carbamazepine is a teratogenic anti-epileptic drug causes neural tube defect plus fetal adenoid-like syndrome with facial dysmorphism, probably baby brain malformation, facial dysmorphism, and neural tube defect. Carbamazepine is a teratogenic anti-epileptic drug cause neural tube defect, fetal adenoid-like syndrome, cause neural tube defect, fetal adenoid-like syndrome with facial dysmorphism, baby brain malformation. ठीक है तो साइड इफेक्ट ऑफ कार्बामेजिन फेशियल डिस्मॉर्फिज्म पेशेंट अंडरगोइंग वीक पेक पर्सन रेट एंड वाटर मॉनिटर फॉर यूट्राइन रप्चर fetal heart rate earliest and most sensitive signs of uterine rupture is fetal bradycardia and less deceleration. Earliest and most sensitive sign of uterine rupture is fetal bradycardia and late deceleration. Maternal tachycardia. Earliest and most sign of uterine rupture is fetal bradycardia and late deceleration. Maternal tachycardia, pain, bleeding come later. तो अर्लीस्ट जो साइन होती है ना वो फीटल पीरियडिया की लेट डिसरेशन होती है वो उसमें फीटल पीरियडिया होता है एंड लेट डिसरेशन होती है 19 years old vaginal discharge fever rash increase bilirubin LFT LMP 10 days ago to stay 4 years toxic short syndrome Tampon stay 4 years toxin fever rash hypotension stay 4 years toxin fever rash hypotension multi-organ involvement fever rash hypotension multi-organ involvement happy maximum infectivity happy antigen maximum infectivity DNA viral application motion fetus adjustment infected तो इथलेट और एमोनिया के जो पेशेंट होती हैं इथलेट है रनर है तो उसमें हाइपोथैलेमिक हाइपोगोनेडोट्रोफिक होगा अगर मीजोप्रेस्टोल है तो डायरिया करेगा मोबियस सिंड्रोम प्रेगनेंसी है वीबेक रप्चर वाच फॉर फीटल हार्ट साउंड फर्स्ट वीबेक रप्चर वाच फॉर फीटल हार्ट रेट फर्स्ट एंड टेम्पन यूज स्टेफोरियस फीवर रेश मल्टी ऑर्गन टेम्पन यूज स्टेफोरियस फीवर रेश मल्टी ऑर्गन हैप्पी infectivity marker for hepatitis B. We surface antigen positive. What will you give baby for prevention? No option mark, but you will return anti-B. Happy antigen positivity. Happy antigen positivity. What will you give baby for prevention of MTCT? Hepatitis B surface antigen. Hepatitis B surface
Hepatitis B surface antigen positive, R will you give hepatitis B surface antigen positive. Hepatitis B surface antigen positive, what will you give baby vibration antigen immunoglobulin वैक्सीन, ठीक है। मतलब आप बेबी पॉजिटिव उसको हम क्या देंगे, इम्यूनोग्लोबिन भी देंगे, वैक्सीन भी देंगे। इम्यूनोग्लोबिन होता है 12 देंगे और वैक्सीन का टाइम जो है 0 1 6 मंथ, ठीक है। न्यू बोन स्पेसिफिक कौन सी है, ग्रुप पॉजिटिव, ये ग्रुप बी डेंसिफाइड, ग्रुप बी टाइमोलाइटिक है, ये ग्रुप अर्ली ऑनसेट न्यूनेटल सेप्सिस एंड मेनिंजाइटिस caused by अर्ली ऑनसेट न्यूनेटल सेप्सिस caused by group B streptococcus gram positive and chain group B streptococcus gram positive and chain group C and D are not neonatal group B streptococcus gram positive and chain multi patient with bulky soft uterus adenomyosis cerebride Chet adenomyosis जो है कीवर्ड सॉफ्ट बल्कि डिफ्यूज दो सॉफ्ट बल्कि डिफ्यूज होगा फाइब्राइड फॉर्म नोडुलर एसिमेट्रिकल होगा, ठीक है। फाइब्राइड फॉर्म नोडुलर एसिमेट्रिकल होगा। डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग नॉर्मल साइज यूट्रस होगा। एडिनोमाइसिस सॉफ्ट बल्कि यूट्रस 12 वीक्स यूट्रस डिस्मेनोरिया मेनोरेजिया रेगुलर सिमेट्रिकल आपको एक मास ऑन स्कैन हाउ टू ट्रेक एक्सटेंट एमआरआई 12 वीक्स यूट्रस डिस्मेनोरिया मेनोरेजिया 12 वीक्स यूट्रस से डिस्मेनोरिया होगा मेनोरेजिया होगा। एक रेगुलर सिमेट्रिकल यहाँ पर एक मास ऑन हाउ टू चेक extent MRI description adenomyosis diffuse medical uterine enlargement hyperechoic area hyperechoic area means dysmenorrhea MRI is a gold standard to assess extent depth of the adenomyosis and differentiate from fibroid ultrasound but MRI confirm extent of biopsy leporo MRI confirm extent of biopsy MRI confirm biopsy leprosity give postcoital bleeding and mild discrepancy colposcopic biopsy, postcoital bleeding, plus abdominal cytology to visualize the key take biopsy, colposcopy alone just look semias, cascavas biopsy alone without corpuscle guide is blind. Sarcoidosis biopsy alone without colposcopy is blind. Multi-endeavor scan to decide C-section contraindication of vaginal delivery, complete breech with extended vaginal delay, extended and fresh head, risk of head intravenous extended footling greater than 4, extended footling greater than 4 kg, placenta previa, a breech with extended complete breech with flared head can be delivered vaginally, complete breech with flared head can be delivered vaginally but extended at C-section. स्टैंडर्ड सी सेक्शन ठीक है। तो स्टैंडर्ड फर्टिलिंग एस्टिमेटेड वेट ग्रेटर देन 4, स्टैंडर्ड फर्टिलिंग एस्टिमेटेड वेट ग्रेटर देन 4, स्टैंडर्ड फर्टिलिंग एस्टिमेटेड वेट ग्रेटर देन standard fertilizing estimated weight greater than 4 kg. Adrenal cyst dysmenorrhea, CPR, chocolate cyst, and endometriosis, chocolate cyst, endometrioma, tired of dysmenorrhea, endometrium, ultrasound, classical, chocolate cyst, deep dysmenorrhea, leproplan, nodule on sacral ligament, deep dysmenorrhea, leproplan, nodule on sacral ligament, endometriosis, deep infiltrating endometriosis involved and deep dysmenorrhea, leproplan, nodule on sacral ligament, deep infiltrating endometriosis involved due to sacral ligament pouch of Douglas, severe dysmenorrhea, dyspareunia, nodule on sacral ligament. Have surface antigen plus mother immunoglobulin vaccine. Have surface antigen plus mother immunoglobulin and vaccine at birth. Surface antigen mother immunoglobulin surface antigen mother vaccine at birth. Neonatal meningitis group B streptococcus or bulky uterus adenomyosis. Postcoital bleeding plus dyskaryosis colposcopic biopsy extended breech head not vaginal delivery chocolate cyst endometrioma. ठीक है। एक्सप्लेनेशंस में हम आ जाते हैं। पेशेंट फॉर प्री कंसेप्शन काउंसलिंग फॉर हर सिस्टर हैज अ डीवीटी and factor V Latin the 50% chance of interference because factor V Latin is autosomal dominant if one sibling has it is to other sibling. Factor V Latin is autosomal. Factor V Latin is autosomal dominant. Factor V Latin is autosomal dominant if one sibling has it is to other sibling. 50% factor V Latin is factor V Latin is autosomal. Factor V Latin is autosomal dominant if one sibling has it is to other Vector 5 Latin is autosomal definite. Vector 5 Latin is autosomal dominative. One sibling has it is to other sibling. 50% wrong. You would you give heparin in pregnancy if positive? Wrong. You would you give heparin in pregnancy? Would you wrong? Would you would give heparin in pregnancy positive? Wrong. Mutation. ठीक है।
Baby delivered after feeding cyanosis triggers to fistula. Milk goes into trachea, choking, coughing, cyanosis, tetralogy of Fallot. Tear displays with crying, feeding, but also is a continuous murmur, boot shape heart. It is a tetralogy of Fallot. Tear displays with a crying feed, but also is a continuous murmur, boot shape heart. Both are tested, but most classic for cyanosis for feeding. Fallot is a more fast cyanosis or crank exertion. Recurrence of Down syndrome after one previous is 1%. 1% होता है पेरीनेटल मोटिलिटी ऑफ अब्रप्शन 20%। और प्लासेंटा प्रीविया में मैसिव हेमरेज का रिस्क कितना होता है 16% होता है और पेरीनेटल मोटिलिटी ऑफ अब्रप्शन 20% होता है ठीक है 8 सेंटीमीटर डायलेटेड ब्लड स्टेन लाइकर बीपी 129 सॉफ्ट यूट्रस अब्रप्शन होता है 8 सेंटीमीटर डायलेटेड ब्लड स्टेन लाइकर 8 centimeter dilated blood stain like a BP 120/90 soft uterus abruption. 8 centimeter dilated blood stain like a BP 120/90 soft uterus abruption. ठीक है was a previa painless bleeding fetus bleedy but no blood like a usually was a previa painless bleeding fetus bleedy but no blood in the like a usually bleedy rupture or the uterus feel fetal distress cord proliferity not a blood stain like a ठीक है बीटा प्रेगनेंट वोमेन है बीटा ऐसे डिले दिन 1600 एंटर ट्रांसलेट नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे आफ्टर 48 आवर्स के बाद रिपीट करेंगे वो तो बीटा ऐसे डिले दिन 1500 TVS repeat in 48 hours drug outside and chlamydia azithromycin drug outside and chlamydia azithromycin drug outside and chlamydia azithromycin drug outside and chlamydia कौन सी है जिसमें एजिथ्रोमाइसिन फर्स्ट लाइन एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम सिंगल डोज और डोजिसाइक्लिन 100 मिलीग्राम BD for 7 days एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम सिंगल डोज एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम सिंगल डोज एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम सिंगल डोज और डोजिसाइक्लिन 100 मिलीग्राम BD for 7 days एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम सिंगल डोज एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम सिंगल डोज एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम सिंगल डोज और डोजिसाइक्लिन 100 मिलीग्राम BD for 7 days एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम सिंगल डोज और डोजिसाइक्लिन 100 मिलीग्राम BD for 7 days ठीक है or erythromycin or erythromycin and pregnancy, fatal violation 50% sibling risk, fatal violation 50% sibling risk, cyanosis and after fatal violation 50% factor violation, fatal violation 50% sibling risk, fatal violation 50% sibling risk, fatal violation 50% sibling risk, fatal violation 50% factor violation में क्या होता है 50% sibling risk होता है cyanosis after fetatology of fistula the tracheostomy fistula, down recurrence 1%, abruption mortality 20%, beta less than 50 at repeat in 48 hours, chlamydia, erythro and erythro in pregnancy, erythro 1 gram, straight in pregnancy, erythro and erythromycin. Anesthesia-related date and pregnant due to aspiration, pneumonia, Madelung syndrome. Cause of anesthesia-related maternal death and Madelung syndrome, aspiration of gastric content, pregnant women have increased body esophageal sphincter tone, delayed gastric emptying, and full stomach. Postnatal prophylaxis of venous thromboembolism. Postnatal prophylaxis of after emergency due to prolonged labor, heparin for 7 days. As a guideline, moderate risk factor like prolonged labor. Low molecular weight heparin 7 to 10 days postpartum heparin 48 hours before surgery is for heparin 48 hours before surgery is for antepartum prophylaxis. Warfarin is contraindicated and warfarin is contraindicated in breastfeeding. Warfarin is contraindicated in breastfeeding. Heparin 48 hours before surgery is for antepartum heparin 48 hours before surgery is for antepartum prophylaxis. Heparin 48 hours before surgery for antepartum prophylaxis contraindicated in warfarin contraindicated in breastfeeding तो हेपरिन ऐसा क्या मिलना हेपरिन हम कब देंगे डिलीवरी का हेपरिन फॉर 7 days लाइक लॉन्ग लेवल 7 to 10 days पोस्टमार्टम 7 to 10 days के लिए देंगे पोस्टमार्टम में पेशेंट विद ITP ट्रांसफर पिलेटरी अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया और सी सेक्शन के अंदर स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए हमें for spinal epidural lead platelet greater than 75 and 80 for spinal and epidural greater than 75 and 80
for spinal and epidural greater than 75 and 80, spinal and epidural greater than 75 and 80, spinal and epidural greater than 75 and 80, spinal and epidural greater than 75 and 80. हाफ लाइफ नॉर्मल 7 to 10 days. हाफ लाइफ कितनी होती है प्लेटिलेट की? 7 to 10 days. ITP 4 to 7 days. So we transfer immediately before surgery and do a spinal once greater than 75. Greater than 70 IPTP immediate and after you wrote ITP immediate and after the device is correctly don't last. ठीक है, तो इसमें ये होता है कि अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया करेंगे के लिए हमें अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए हमें ग्रेटर देन 75 एंड 80,000 चाहिए और देते हैं हम कितने 7 to 10 days के लिए देते हैं लो मालिकुलर रेट हेपरिन ठीक है नॉन इन्वेजिव टू मेजर एनीमिया फीटल एमसीए डॉपलर अल्ट्रासाउंड कोटोसेंटेसिस जो है वो इन्वेजिव है डायग्नोस्टिक है और फीटल एमसीए डॉपलर अल्ट्रासाउंड फीटल एमसीए डॉपलर नॉन इन्वेजिव गोल्ड फीटल एमसीए नॉन इन्वेजिव गोल्ड स्टैंडर्ड फीटल एमसीए नॉन इन्वेजिव gold standard fetal MCA non-invasive gold standard DTK multi with cord prolapse 10 centimeter dilated multi cord prolapse 10 centimeter dilated C-section cord prolapse very dilated immediate delivery C-section if not deliver less than 5 minutes take time and multi if vertex is low and no head and trapped you could vaginal but the safest is answer with cord prolapse safest is mother with cord C-section. Safest is mother with cord C-section. Cord prolapse 4 centimeter in primary C-section. Patient with first trimester recurrent prolapse treatable applause. Causes of recurrent prolapse chromosomal 50% uterine endocrine applause. Thrombophiliac treatable applause. Low doses aspirin and treatable causes applause. First trimester pregnancy loss applause. First trimester pregnancy loss. Apply 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 treatable cause low dose aspirin and heparin unmarried bleeding after induced abortion called CAMI. Unmarried bleeding after induced abortion called CAMI. Absent regime septic abortion. Septic abortion resuscitate antibiotic evacuation resuscitate antibiotic resuscitate antibiotic evacuation septic abortion unmarried bleeding after induced abortion called unmarried bleeding after induced abortion called CLAMI unmarried bleeding after induced abortion unmarried bleeding after induced abortion called CLAMI triple regime to unmarried bleeding after induced abortion called CLAMI triple regime resuscitate broad spectrum evacuation resuscitate broad spectrum evacuation triple antibiotic amphibian resuscitate broad spectrum evacuation resuscitate broad spectrum evacuation resuscitate broad spectrum resuscitate broad spectrum evacuation 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 ठीक है तो ट्रिपल एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन जिंटामाइसिन मेट्रोनिडाजोल sustenance come after suction evacuation come after antibiotic started triple regime is first step and suction evacuation come after suction evacuation comes after suction evacuation come after suction evacuation comes after suction evacuation suction evacuation come after antibiotic ampicillin gentamicin metronidazole ampicillin gentamicin metronidazole ampicillin gentamicin metronidazole resuscitate broad spectrum evacuation resuscitate broad spectrum evacuation resuscitate broad spectrum evacuation resuscitate broad spectrum evacuation resuscitate broad spectrum resuscitate ब्लड स्पेक्ट्रम एवाक्यूशन ठीक है रिसर्चिटेट करेंगे ब्लड स्पेक्ट्रम करें देंगे उसको एवाक्यूशन देंगे उसके बाद ट्रिपल रेजिम कौन सी है एम्पिसिलिन है जेंटामाइसिन है मेट्रोनिडाजोल है फिर आ जाए प्राइमेट हिस्ट्री ऑफ क्लेमाइडिया ट्यूबल इनफर्टिलिटी फैक्टर है टीपीआईडी ट्यूबल डैमेज ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी मेल फैक्टर रूल आउट ओव्यूलेटरी मोस्ट लाइकली ट्यूबल इन सम with history of chlamydia patient with weight gain hysterectomy COC with cryptosterone acetate COC with cryptorine acetate CSC with cryptorine acetate COC with cryptorine acetate CSC with cryptorine acetate IDP platelet half life 4 to 7 days handwritten gold handwritten notes gold
ITP platelet half-life 4 to 7 days. Granulosa plyotrain chromosomal PCOS and COC 35 MCA Doppler par fetal anemia. ठीक है. Infertility, weight gain, estrogen, acne, and increased testosterone levels. In classic PCO findings are hyperandrogenism, increased testosterone, increased LH, FSH, weight gain, acne, estrogen. ठीक है. Patient with syphilis ELISA positive 2.4 million benzyl penicillin. Wide dose for syphilis in pregnancy and benzyl penicillin 2.4 million. International IM single dose for early syphilis 2.4 million IM 2.4 million IM single dose 2.4 million IM 2.4 million IM single dose. Pale sensor and painful lymphadenal node region. Pale ulcer and painful pale ulcer and pale ulcer painful lymphadenopathy lymphadenoma lymphogradenoma venerum. Pale ulcer and painful pale ulcer painful pale ulcer and painful Palace ulcer and painful lymph node region, lymphadenoma venerum, palace ulcer and painful Palace ulcer and painful lymph node, palace ulcer and painful lymphadenoma, palace ulcer and painful lymph node, lymphadenoma venerum, suspected mucospecium, clear airway, suspected meconium aspiration, clear airway, vigorous if baby is vigorous, dry, stimulate routine care. अगर बेबी विग्रेस से ड्राई करेंगे स्टिमुलेट करेंगे रूटीन केयर करेंगे इफ नॉन विग्रेस इनक्यूबेट एंड सक्शन एयरवे section area head plus 2 occipital anterior mother resource nebular balance for shape head plus 2 है occipital anterior है head plus 2 है occipital anterior है mother resource nebular brain forceps कंधा से y plus 2 station occipital anterior maternal exhaustion operate vaginal delivery nebular branch for occipital anterior and sems for occipital posterior canine rotation for shape can Cambrian, Virgili outlets, and Cambrian and Piper Bridge, Cambrian and Cambrian and Piper Bridge. ठीक है. Occipital posterior vacuum. Occipital posterior plus 2 with a good fetal heart rate vacuum can be used in occipital posterior filtration not needed. Occipital posterior plus 2 good with fetal heart rate. Occipital posterior 2 plus good with fetal heart vacuum can be used in occipital posterior filtration not needed much. Fast is better for rotation. Fast is better for rotation, but vacuum is safer and preferred by many for occipital posterior position. Both are options, but vacuum is more correct here. वैक्यूम कॉम्प्लिकेशंस की क्या होती हैं सेफिलिया हेमेटोमा और वजाइनल टीयर्स होती हैं नॉर्मल वजाइनल पेन है नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी है उसमें कोरेक्टल पेन है ये वजाइनल हेमेटोमा है सीवियर पेरिनियल रेक्टल पेन आफ्टर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी rectal pain, perineal and rectal pain, vaginal hematoma, prolonged hospital stay risk infection. Prolonged hospital stay risk क्या है infection है most common risk with prolonged stay nosocomial most common risk with prolonged stay nosocomial infection. Prolonged hospital stay risk most common risk with prolonged stay nosocomial infection. Primary amenorrhea of the circulation membrane perforate hymen baby microcephaly inclusion cytomegalovirus baby है microcephaly inclusion body से तो ये cytomegalovirus है 35 weeks circle size baby prevent shoulder dystocia addiction है 38 4 week for non-diabetic microsomia 38 to 39 weeks does not reduce the shoulder dia increases resistance rate में but many case still mark 30 non-diabetic for non-diabetic women says it does not reduce the shoulder distortion case section rate, but many cases still mark induction 38 week to prevent further growth. 39 week estimate greater than 4. Such alone is not management, so be what want. They want 38, 38, 39 weeks, 38 to 39.
38 ग्रेटर देन। अगर पीसीओएस है आपका तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। ये बज़वर्ड्स हैं, ठीक है? आखिर में आ जाते हैं ना फिर नीचे बज़वर्ड्स, सही है? तो इसमें पीसीओएस है, पीसीओएस में क्या होता है? इंक्रीज़ टेस्टोस्टेरोन, इंक्रीज़ एलएचएफएसएच। पीसीओएस में होता है इंक्रीज़ टेस्टोस्टेरोन होता है और इंक्रीज़ एलएचएफएसएच होता है। ठीक है, सिफिलिस में जान पेनिसिलिन 2.4 देते हैं हम, अगर नहीं और फिर लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम पहले सेल से होता है, फिर इंग्वाना लिम्फेडिनोपैथी होती है, मेकोनियम क्लियर एयरवे फर्स्ट इफ नॉन वेगरियस ऑसिपिटो इंटीरियर जो चढ़ने वाला है ब्रेन स्पॉट से ऑसिपिटो इंटीरियर जो चढ़ने वाला है ब्रेन स्पॉट से यूज़ करते हैं, वैक्यूम से फिर हेमेटोमा करते हैं, पोस्ट में वजाना डायरेक्ट वजाना हेमेटोमा परफोरेटाम बिल्जिंग में ब्रेन होती है। Same oval inclusion bodies microcephaly, microsomia, non-diabetes induction 38 week per IM की, ठीक है? Twin pregnancy first delivered second trimester twin pregnancy first delivered हो गया second transfer से fetal heart rate 100 happy with breech extraction and PV with breech extraction after first twin deliver second twin transfer very emergency happy breech extraction is fastest first ACV takes time C-section takes time to prepare Eurote IRM prevalence second twin load second is common. Yes, common IP with breech restriction. Bradycardia, bradycardia, IP breech extraction. ठीक है, IP करेंगे fetal rate rate है ना IPV with breech extraction करेंगे, ठीक है? मल्टी एली लेबर विद ट्रांसफर मल्टी एली लेबर में ECV करेंगे एली लेबर विद ट्रांसफर लाइन मल्टीप्लाई यू कैन ट्राई ECV membrane intake no contraindication inactive label little inactive label late inactive label let's see section watch for lie operation is for unstable lie not face transverse application with pleuritic chest pain and SOBVQ application with pleuritic chest pain plus application with pleuritic chest pain and SOBVQ scan but you close the apply scalpel embolism pregnant patient application with pleuritic chest pain SI application with pleuritic chest pain plus SOB application with pleuritic chest pain plus SOBVQ scan application chest pain and SOBVQ scan करेंगे but you close it why apply scalpel embolism pregnant patient is needed then VQ scan is investigation of choice VQ scan but you cross it apply एप्ला हाई रिस्क का पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है एप्ला में ना हाई रिस्क होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का प्रेग्नेंट पेशेंट with chest x-ray first if needed then we scan as investigation of choice CTP is about radiation D-dimer unreliable in pregnancy is not relevant but whether or not if pulmonary embolism if not then we scan is correct answer. अच्छा, अगर हमें लग रहा है ना एप्ला की पेशेंट है और हमें लग रहा है हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट हम उस पेशेंट का जो है ना चेस्ट एक्सरे कराएंगे देन वी स्कैन करेंगे, ठीक है? How to diagnose trial of labor? Again, can be diagnosed by facial trial of labor despite good contraction. It is not routine, does not predict well. VBAC contraindication, classical C-section, a contraindication to VBAC, classical uterine incision, T-shape incision, previous rupture, and adequate pelvis. Not a contraindication with illness at 35 week and pH macrocytic anemia with illness. SOB at 35 weeks and history of PPH, macrocytic anemia, history Y PPH history iron deficiency anemia. SOB is a common birth history of PPH anemia. First, cardiac failure, pulmonary malaise like with other cyanotic cardiac patient. Good. Incidence 10.5 and case 10.5 MCV, low HBV, medical 31, ferritin 10, macrocytic anemia from MCV decrease, ferritin less than 30, iron deficiency anemia, ferritin normal 30 होता है, ferritin less than 30, and iron deficiency anemia, ferritin less than 30, iron deficiency anemia, ferritin less than 30, iron deficiency anemia, ferritin less than 30.
fertility less than 38 iron deficiency anemia, TKHB next step to rule out cause CBC with MCV. First step is anemia workup CBC with indicator tail microvis normovis macro, then ferritin electro. First sign to prolonged deceleration, first sign of imminent rupture, prolonged deceleration, earliest and most sensitive sign of uterine rupture is the fetal heart rate abnormality, prolonged deceleration, and bradycardia, tachycardia, maternal pain come later, tachycardia, maternal pain comes prolonged deceleration and prolonged deceleration and prolonged deceleration and bradycardia, prolonged deceleration and bradycardia, prolonged deceleration and bradycardia. Rupture of uterus on admission, fetal heart rate abnormality, severe above fetal urgent, earliest birth standard, maternal mortality definition up to 42 days, maternal mortality की जो definition है up to 42 days है, maternal mortality definition up to 42 days है, WHO definition देता women during pregnancy or during देता women during pregnancy or within 42 days of termination, related cause 42 days, maternal mortality definition 42 days है। ठीक है, maternal mortality deficient 42 days है, maternal mortality definition 42 days are not sure about LMP. Beta HCG is for pregnancy test to do it pregnancy when LMP unknown, early ultrasound and CRL, ultrasound and CRL is based. Early ultrasound and CRL is based. Early ultrasound and CRL is based. ठीक है, सेकंड टू इन ट्रांसफर है एनवेडी है आईपीवी रजिस्ट्रेशन करेंगे अर्ली लेबर ट्रांसफर ट्राई सीवी अर्ली लेबर है ट्रांसफर अर्ली लेबर है मेम्ब्रेन एंट्रेक है ट्राई सीवी अप्लाई एन एसओबीवी क्यू स्कैन सीपीडी डायग्नोज ऑन ट्रायल सीपीडी डायग्नोज ऑन ट्रायल ऑफ लेबर वी बेक contraindication classical C-section SOB plus history of PPI think microcytic anemia SOB plus PPI think microcytic SOB plus think SOB plus PPH, think microcytic SOB plus PPH, think my SOB plus PPH, think microcytic anemia, SOB plus PPH, think microcytic anemia, SOB plus PPH, think my SOB plus PPH, think microcytic anemia, anemia vertical CBD first rupture, prolonged deceleration, fetal and bradycardia, maternal death up to 42 days postpartum, maternal death up to 42 days.